Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, the past tense. Okay? The past tense is a verb tense used to express an action that has already occurred in past. Past tense वह होता है जो भी हमारी एक्टिविटी भूतकाल पर डिपेंड होती है उसी को हम पास्ट काल कहते हैं, अर्थात जो बीता हुआ समय होता है. एग्जाम्पल है आई जम्प्ड इनटू द लेक. मैं लेक में कूदा था, है ना, वो कार्य पहले ही कर चुका है. नेक्स्ट है आई वॉज वेरी अपसेट. मैं बहुत उदास बैठा था. आई वॉज वेरी अपसेट. मैं बहुत उदास था. नेक्स्ट है ही वॉज द टीवी. वह टीवी देखता था. फिर दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे. ओके जो कार्य भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय को इंडिकेट करता है उसी को पास्ट टेंस कहते हैं. Past tense has four forms. Number first है simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. चलिए पहले हम रीड आउट करते हैं simple past tense. Simple past tense is also known as past indefinite tense. It is used to indicate an action completed in the past. The simple past tense is formed with the second form of the verb. यहाँ तक कि जो past tense है जब सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं. एग्जाम्पल है शी वर्कड एट द गारमेंट फैक्ट्री. वर्ड्स लाइक जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट्स. ओके चलिए यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस है जैसे इट इज यूज्ड टू शो द वर्क और एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू माई कजन्स होम yesterday. नेक्स्ट है टू शो ए रेगुलर रिपीटिशन एक्शन ऑफ द पास्ट. एग्जाम्पल है माई मदर ऑलवेज टुक अ वेजिटेरियन मील. नेक्स्ट है टू शो हिस्टोरिकल इवेंट्स. एग्जाम्पल्स है इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947. ओके चलिए पॉइंट्स टू पॉन्डर कॉलम्स है. टू form negative sentence in the simple past tense, we use past form of do along with the not and the base form of main verbs as did not come. For example, he did not write a letter. Next to form interrogative sentences, we use did at the beginning of the questions and with the main verb taking on its base form. For example, we went by bus. Did we go by bus? Okay, चलिए आगे है सिंपल पास्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चलिए करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस जो होता है एक्सप्रेस करता है एन इवेंट हैपेंड एट अ डेफिनिट टाइम. एक निश्चित समय को. विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है कंप्लीटेशन ऑफ द इवेंट बाय नाउ. जो पूरा हो चुका था वह उसके बारे में बताते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य किया था वह उसके बारे में बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस. ओके चलिए एग्जांपल है आई हैव रीड द पोएम. मैं किताब पढ़ चुका हूँ या मैं पोएम पढ़ चुका हूँ. मैं पोएम पढ़ चुका हूँ बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट. लेकिन मैं इसको नहीं समझ पाया अच्छी तरीके से. ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. चलिए आई रीड दिस पोएम yesterday. मैंने कल किताब पढ़ी. ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस. ओके चलिए सिंपल पास्ट हैज नो रिलेशन विद द प्रेजेंट. सिंपल पास्ट का प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है. while the present perfect tense expresses the present state of the completed action. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमें बताता है कि कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है. तो जो कार्य पूरा हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, और जिसमें कार्य हो गया है ना बीता हुआ समय तक हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस. दोनों की अर्थ मीनिंग एक जैसी होने के बावजूद भी इन दोनों को कोई रिलेशन नहीं है. एग्जाम्पल है ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years. ये हो गया सिंपल पास्ट.
He has lived in Gujarat for 5 years. ये हो गया हमारा present perfect. Okay. Adverbs of the past times are not used in the present perfect tense while they are often used in the simple past. एग्जाम्पल है मेघा एंड मानव हैव बॉट अ हाउस. उन मेघा और मानव ने क्या किया? घर खरीद चुके हैं. उसके बाद है मेघा और मानव बॉट अ हाउस लास्ट ईयर. मेघा और मानव ने पिछली साल घर खरीदा. ओके, तो दोनों कार्य कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट के समय में कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट. जो पहले ही पूरा हो चुका था वो हमारा सिंपल पास्ट. ओके, चलिए आगे है past continuous tense. Past continuous tense is used to talk to an action going on at some points in the past. जो past continuous tense है वो हमें जो भी हमारी बातें होती है उनके बताते हैं कि जो बातें चल रही है या जो एक्टिविटी चल रही थी उनके बारे में इंडिकेट्स करता है. It shows an action continuing over a period of time in the past. We form the past continuous by using was verb with the ing from the main verbs. Okay, चलिए एग्जांपल्स हैं. He was sleeping yesterday. वह कल सो रहा था. I was reading my book. मैं अपनी किताब पढ़ रहा था. Okay, चलिए uses of the past continuous tense है. It is used instead to describe an action that started in the past and was going on for a while at the time of speaking. Example is she was reading a book. Except to express the relatively longer during in the past tense compared to one of the shorter duration. Example है when the father entered the room. जब father room में entered करते हैं the child was crying. बच्चे चिल्ला रहे थे. Except to show continuing action then depicting a story. Example है The king was reading a horse. चलिए point to ponder columns हैं. To form negative sentence in the past continuous tense, we use the word not between the auxiliary ing form to main verb. For example, the children were not paying attention to the lecture. Next है to form interrogative sentences, we use the helping verb to the beginning of the sentence. The subject comes between the auxiliary verbs. ing form के साथ main verb में. For example है स्नेहा was waiting at the classroom. स्नेहा क्लासरूम में वेट कर रही थी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Past perfect tense. We use the past perfect tense to describe an action completed before a certain point of time in the past before another action began. Okay, चलिए the structure of the past perfect tense इसका है had plus past participles form of the verb. Example, we had finished our homework when our father returned from office. To form the negative in the past perfect, we simply add not after the helping verb. Example है he had not bought a pencil. To form the interrogative, bring the helping verb to the beginning of the sentences. The subject comes between the auxiliary verb and the past participles of the main verb. चलिए example है you had made tomato soup that day. Had you made tomato soup that day? Okay, चलिए आगे है past perfect continuous tense. चलिए पढ़ते हैं. It is used to indicate an action that occurred before a certain point of time in the past and continued up that moment was still in progress. At that moment or had recently finished. The structure is had been verb के साथ ing form the main verbs है. Example है Shivam had been working for 5 hours when the bell rang. In the above sentences, we talk of an action that started in the past and that continued up until another time in the past. To form the negative in the past perfect continuous, we simply add not after the helping verbs. Example है had not been cleaning,
had not been eating. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.